itself sits in the shadows of its imposing monument, but is a small and welcoming city. The ancient Mughal-era Agra Fort is an attractive spot to visit. Peer over the walls and इंडिया की बात करें तो देयर आर मोर देन 4000 सिटीज इन इंडिया, और अगर इसके अंदर हम जगहों की बात करें तो लाखों जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेट इज माइंडस्केच क्लब। सो गाइस, आज हम जो है वो 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया पे अपना रिएक्शन देंगे। और अगर प्लेसेस की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा पता ही है कि एक प्लेस जो फेमस है आगरा में ताजमहल, जिसको आई गेस बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर भी बाहर से आते हैं, हमने देखा है कि वो भी विजिट करते हैं और इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी वहां जाते हैं विजिट करने के लिए। तो मुझे लगता है इन टॉप 10 प्लेसेस में ये प्लेस तो होनी ही चाहिए, बनती ही है। और इसके अलावा हम इंडिया के अंदर जो है काफी बीचेस भी है, लाइक गोवा बीच काफी मशहूर है। सारे जैसे बाहर कैसी मिट्टी होती है, गोल्डन और सैंड वैसी मिट्टी होती है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ 5 स्टार रिजॉर्ट्स भी जो है वहाँ पे हमें मिलेंगे। तो मतलब अगर आप इंडिया में ही रहते हो और आपको इंटरनेशनल लेवल टाइप की कोई पिकनिक करनी हो तो आप गोवा जरूर जा सकते हैं विद 5 स्टार रिजॉर्ट्स। और मैंने केरला के बारे में भी बहुत ज्यादा सुना है, इवन हमारे जो 2 चैनल है उन लोगों पे आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि केरला की ब्यूटी के ऊपर आप रिएक्शन दें, क्योंकि आप उसकी अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखना है और नेचर ब्यूटी देखनी है, पहाड़ वगैरह और माउंटेन्स, तो केरला जो है वो एक बेस्ट प्लेस है आई गेस। सो गाइस, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की जानिब जाएं, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज माइंडस्केच। इसके अलावा हमारे 2 चैनल्स और भी हैं, माइंडस्केच और माइंडस्केच ट्रेंडिंग। आप उसे भी जो है वो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं। आपकी जो जो रिकमेंडेशन है आप हमें वहां पे बता सकते हैं। आज हम इंडिया को इंडिया देखेंगे। India is an enormous and diverse destination, bordered by 7 different countries, not to mention the Arabian Sea and the Bay of Bengal, means that there are many different sides to the country. More than 20 official languages, multiple religions, and a variety of cuisines exist within India's borders. To truly experience the breadth of Indian culture and history, travel is key. Here's a look at the best places to visit in India. 47 से पहले की चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस। Number 10, Udaipur. The city of lakes, Udaipur glistens romantically on the edge of the desert in Rajasthan. The city is protected by lush hills and is where you can find the mesmerizing Lake Palace in the middle of a tranquil lake. Another captivating sight is the imposing but graceful city palace, along with the Monsoon Palace, which stands out with walls made of gleaming white marble. Explore old temples, walk the winding streets of this fanciful corner of India, and slip into times past inside its ancient bazaars. बाइकें तो बहुत हैं। Number 9, Amritsar. The Punjabi city of Amritsar lies on the border with Pakistan and is home to the holiest of Sikh sites. The Golden Temple is in the heart of the old walled city. This serene Sikh shrine provides a place for reflection and inspiration. You can tour the Golden Temple regardless of religion, but you will need to show respect by covering your head and removing your shoes. The streets surrounding the temple are a frenetic fusion of people, markets, and activity.
Be sure to pick up some traditional goods, such as hand-embroidered fabrics and delicately ornate shoes. कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा टेम्पल है यार। Number 8. Ladakh. In northernmost India, in the heavily disputed Kashmir region, is the mountainous destination of Ladakh. This region is large, but it has a low population density and a number of nomadic residents. Breathtaking, pristine scenery is a major draw to the area, but virtually all travelers will also spend time in the town of Leh. The town is located at a very high elevation, and it is home to the 17th century palace of the King of Ladakh. Buddhist culture is also prominent in Leh, and you may wish to explore some of the many Buddhist monasteries and temples. Number 7. Goa beaches. On the western coast of India is Goa, a former colony of Portugal that blends Indian culture with colonial influences and plenty of international tourism. Goa is popular largely because of its spectacular beaches. The busiest of all is Candolim Beach, where travelers from around the world flock to soak up the sun. Anjuta Beach, by contrast, is far less crowded. It is also an amazing place where you can walk to Chapora Fort and admire the sandy coastline from a new perspective. Palolem is considered one of the most beautiful beaches in all of Goa, with its natural bay surrounded by lofty headlands on either side. सब बीच योगा। Number 6. Delhi. If you're spending any time in northern India, you will almost certainly visit the capital city of Delhi. The enormous, sprawling destination is home to several districts, and it is considered to be one of the oldest cities in the world. One of the top sites in Delhi is the Red Fort, which was built in the 17th century. The Red Fort is made from sandstone, and you will be able to walk through its Lahore Gate, into the bazaar, through the Jewel Palace, and even into the former residence of the Sultan. While in Delhi, you should also make time for the many museums and religious structures that make up the city. Red Fort was our famous historical place. capital भी है। पब्लिक बहुत है, अराउंड 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ओए नाइस यार, मुझे सिडनी का वो याद आ गया। ब्यूटीफुल। Number 5. Ellora and Ajanta Caves. In the state of Maharashtra, you can explore the caves of both Ellora and Ajanta. At Ellora, there is an enormous complex of shrines carved from the rocky landscape. These 34 cave shrines are up to 1,500 years old, and they are from 3 distinct religions: Buddhism, Jainism, and Hinduism. 2 hours away is Ajanta, which is home to 29 caves. The Ajanta caves are covered in murals and paintings, most of which reflect Buddhist stories. While the 2 cave complexes are 2 hours away from one another, it is well worth visiting both to compare these incredible attractions. मेंटेन किया हुआ है, मतलब पुरानी बिल्डिंग को भी जिस तरह मेंटेन किया हुआ है, इसकी मेंटेनेंस एक्सपेंस भी इतना होता होगा।
Number 4. Varanasi. A city that may seem strange to many Westerners, Varanasi is of great religious importance. The holy city sits on the banks of the divine Ganges and is believed by Hindus to be a sacred place of pilgrimage. The city is known for the religious practices that take place on the Ghats alongside the river. Pilgrims wash themselves in the waters of the Ganges, and the bodies of Hindus are cremated. The sights of life and death along the riverside can be shocking, but a visit to Varanasi is also contemplative and ultimately helps visitors to further understand India's deep cultural and spiritual practices. अपनी ही गलियां लगती है। People around the world आते हैं, I believe. Number 3. Kerala. The southwestern state of India, known as Kerala, is a place of tropical beauty. Palm trees, white sand beaches, and ecotourism are all big reasons to explore the region. Besides its famous backwaters, elegant houseboats, and temple festivals, Kerala is also home to the Thekkady Tiger Preserve. The hub of Kerala is the city of Kochi, where you can see the local fishing industry thriving along with modern high-rises and colonial architecture. Go ahead. गेंद भी बहुत है। एक तो सही है यार। Number 2. Agra. Agra is known for one thing, the iconic and ultimately impressive Taj Mahal. Set on the south bank of the Yamuna River, the Taj draws millions of tourists a year. Built by an emperor as an extravagant memorial to his wife, the mausoleum's porcelain white marble is an emblem of romance and adventure. Agra itself sits in the shadows of its imposing monument, but is a small and welcoming city. The ancient Mughal-era Agra Fort is an attractive spot to visit. Peer over the walls and catch your first hypnotizing glimpse of the Taj. लाइन देख कितनी बढ़िया से जाना। मार्बल भी आएगा बस ठंडे वाले होंगे। हाँ ऐसे ही। ये अंदर का। इनके सामने एक और होगा। Number 1. Jaipur. The pink city of Jaipur is the capital of Rajasthan and is where you can find the beautiful Amber Fort, a sprawling, stunning complex set in the hillside overlooking a lake. Located just outside of the city and built in 1592, the grandiose citadel was also a palace for some time, but is now an impressive tourist attraction. Make sure to take a trip to the opulent city palace with its stunning courtyards and gardens, plus the amazingly intricate Palace of Winds. Jaipur forms one corner of the Golden Triangle, and it also makes a great gateway into the lesser-known destinations within Rajasthan.
वहां से भी बहुत प्यारा आया। ओ हो, पानी के अंदर रात को कैसा लगता होगा? ये आ गया। अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल वीडियो। आई थिंक ज्यादातर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में अगर हम देखें हर जगह पे है और Exactly. कल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये आई गेस टॉप 10 प्लेसेस तो थी, लेकिन टॉप 10 सिटीज के बारे में बताया था Exactly. कि आप कौन कौन सी सिटीज जा सकते हो। और थैंक गॉड हमने जो दोनों सिटीज के नाम लिए थे वो दोनों थे, गोवा भी था, केरला भी था और आगरा भी इवन इसके अंदर था। तो ऑफकोर्स ये तो सिटीज है जो कहीं भी कोई भी जाता है तो इन सिटीज को जरूर जाता है। एग्जैक्टली और काफी मजे की जगह है, मतलब अगर पर्सन एक बार जाए तो वापस दोबारा ऐसा नहीं है कि जाने का उसका दिल नहीं होता। और इंडिया इतना बड़ा है कि आप एक बार में पूरा देख भी नहीं सकते हो। आई बिलीव ये 10 सिटीज भी आप एक दिन का एक टूर में विजिट नहीं कर सकते हो। 10-12 दिन से भी ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी हमने बताया कि 4000 सिटीज से तो ज्यादा उनकी सिटीज है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। और इवन हमने बहुत सारी कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी है कि बहुत सारी तो एडवेंचर प्लेसेस भी बहुत सारी है इंडिया में। तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक फर्स्ट टाइम इंडिया को इतने क्लोजली देखा। और इन जगहों के बारे में मोस्टली हमने सुना तो था, समहाउ मूवीज में हम देखते हैं कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, लेकिन आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मजा आया। सो गाइस, आप लोग बताएं कि आप लोग इनमें से कौन सी सिटी में रहते हैं और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है वहां का, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तिल दिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।